once again welcome in my YouTube channel. Myself Dr. Shivaji Pawar, and on student demand I am making very short video exam point of view of Mumbai University, that is topic called as BJT, that is bi-junction transistor. BJT called as bi-junction transistor. Bi-junction transistor. वेटेज रहेगा रफली 6 मार्क्स. एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 1 क्वेश्चन विल बी देयर. So according to that I will teach, because BJT is a big topic. In my next playlist I will give the detailed video about BJT, biasing, its temperature drift, then design of amplifier and everything in electronic series. But it is time to just concentrate on only revision point of view, 2 questions. So question number 1, explain construction and working principle of BJT. Explain construction and working principle of BJT. Working principle of BJT. ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, and then we'll see another question, that is explain BJT as an amplifier. So first, in construction we already familiar, because in 12th standard also you have done. So how to write the answer? First point, that you have to write the construction. Construction point of view, BJT get classified into 2 parts. One is called as NPN and another is called as PNP. PNP. So structure is very simple. If I sandwich P-type semiconductor material, if I sandwich P-type semiconductor material between 2N, formation is called as NPN. Formation is called as NPN. And in opposite side, if I sandwich now N-type semiconductor material between 2P, the formation is called as PNP. So simple, P, NPN and PNP. So automatically you have 3 semiconductors, so 3 terminals are there. So if I take one terminal away from this end, then this terminal is always called as emitter. Middle one terminal is called as base, and the last terminal is always called as the collector. So basically BJT consists 3 terminal: emitter, base, collector. Here also the same. This terminal is called as emitter, this terminal is called as base, and this terminal is called as the collector. So basically BJT looks like a 3 terminal: emitter, base, collector. And now if you think about the junctions, can I say the first junction take place between emitter and base? That's why this junction is called as emitter base junction. What is this junction is called as? Emitter base junction. And this junction is called as collector base junction. Similarly here also emitter base junction, and opposite side it is called as the collector base junction. And that's why name of this device become bi-junction. Why bi-junction? Because it consists 2 junctions. One junction between emitter and base known as emitter base junction, and one junction between collector and base, it is called as collector base junction. And that's why name of the device is bi-junction, or sometimes it is called as bipolar also. Why bipolar? Because current conduction take place due to both majority and minority current, because it consists P-type as well as N-type. That's why sometimes name is bipolar or bi-junction. So in first point you have to draw this diagram and explain the 2 junction in this one, and then in short you have to write 3 important terminals कि क्या रहेगा combination of emitter construction में. तो basically basic function of emitter is to emit the electron. क्या करना होता है कंसेप्ट इसका? इमिटर का काम क्या होता है? emit the electron if it is NPN and emit the holes if it is PNP. That's why doping मतलब देने वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए. That's why doping is high. So emitter is always doping is high, that is called as heavily doped. So this is the meaning behind the emitter. Emitter is always heavily doped. What is the function of base? Second parameter है आपका base. Base का क्या काम है? It act as a transfer agent between emitter and collector, and that's why doping should be very, very small, so that no recombination take place across the base region. That's why base is generally called as the lightly doped.
base is called as lightly doped. And the last part रहेगा collector. तो basically collector has moderately doped. तो तीसरा पैरामीटर आपको रहेगा collector. collector का काम क्या है? collector has to collect the electron or holes depending upon the combination, collect the electrons or holes which is emitted from emitter, and that's why doping level of collector is always called as moderately doped. What is it called as? Moderately doped. तो इन कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो once again I repeat, in BJT it is called as a bipolar or bijunction. Why? Because it consists two junction, one junction between emitter base, another junction become collector base. And in same about PNP also, emitter base junction and collector base junction, that's why it is called as bijunction transistor. And current conduction take place due to majority and minority carrier, that's why it is also known as bipolar transistor. Similarly, if you see about the doping profile of BJT, then emitter is always heavily doped because it has to emit maximum number of electrons towards the collector. It has to emit maximum number of electrons or maximum number of holes. That's why doping level of emitter is very very high. Base basically act as a transfer agent. किसका काम ही है? It has to transfer electron from emitter to collector or holes from emitter to collector. That's why doping level of base is very light. That's why base is called as lightly doped. And what about function of collector? Collector has to collect the maximum electrons and holes emitted from electron. That's why doping is less than emitter but greater than base. That's why word is moderately doped. So in construction you have to explain this particular part in short. What is the construction of BJT? Now the working principle. Working principle point of view, I am taking the NPN transistor. Working principle point of view, BJT get classified into two part. One is called as unbiased BJT, and second part रहेगा that is bias BJT. So in electronics many times there is a confusion. What is the meaning of biasing? Biasing का मतलब होता है application of external voltage. What is the then meaning of unbiased? I am not applying any voltage. That is called as unbiased. If I apply voltage, then it is called as a bias. So first we see what is the unbiased BJT. क्या रहेगा unbiased BJT? अगर मार्केट से आप BJT लेके आए and you are not applying any voltage, if I suppose take NPN, टू जंक्शन है आपके पास. एक जंक्शन को मैं कहूंगा इमीटर बेस जंक्शन और दूसरे जंक्शन को कहूंगा कलेक्टर बेस जंक्शन. तीन टर्मिनल मार्किंग ऑलरेडी आपके हैं. पहला टर्मिनल रहेगा इमीटर, दूसरा टर्मिनल रहेगा बेस एंड तीसरा टर्मिनल रहेगा कलेक्टर. तो तीन टर्मिनल हो गए, दो जंक्शन हो गए. अगर मैंने इस बीजेटी के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज अगर नहीं अप्लाई किया तो उसे कहेंगे अनबायस. तो जब अनबायस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा अंदर? इवन दो there is no voltage, we know that there is a majority carrier in n type, that is called as electron. Majority carrier in holes is called as hole, P is called as holes, and again majority carrier called as electron. ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका ट्रांजिस्टर का. जब उसके पास कोई वोल्टेज नहीं रहेगा तो ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन नियर टू द जंक्शन एंड होल्स नियर टू द जंक्शन गेट रिकम्बाइन, and due to recombination there is formation of depletion region in emitter base and depletion region in collector base region. So this region is called as depletion region. तो दो depletion region फॉर्म हो जाएंगे, एक between emitter base और एक depletion region फॉर्म होगी between collector base. और depletion region आप भी जानते हैं कि चार्ज फ्री फेस होता है. That's why there is no electron further flow from emitter to base or base to collector or collector to base. That's why unbiased BJT there is no flow of electric current from one side to another side, and that's why we have to apply suitable voltage, and that is called as biasing of BJT. Second part जो है that is called as biased BJT, means you have to apply suitable voltage. So what are the different biasing methods for BJT? Different biasing methods मतलब application of voltage हम कैसे लगा सकते हैं BJT में? आप भी जानते हैं डायोड में कितने जंक्शन थे? एक. हमें बैटरी कितने लगे? एक. कैसे कनेक्ट किया? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. बट बीजेटी में जंक्शन कितने हैं? दो. बैटरी कितने लगेंगे? दो. लेकिन उनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? चार. इसलिए बाइसिंग मेथड अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है तो मैं दो जंक्शन ले रहा हूँ, इमीटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन. उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेटिंग रीजन, ये याद रखना है, ऑपरेटिंग रीजन होता है बीजेटी का, ऑपरेटिंग रीजन. एंड सबसे ज्यादा लास्ट में रहेगा इसका क्या एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है. तो बाइसिंग में सबसे पहले
मेरे पास दो बैटरीज रहेंगे क्योंकि मेरे पास दो जंक्शन है। तो अगर मैंने इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया, पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया, तो जिस रीजन में ये ऑपरेट करेगा इस रीजन को हम कहेंगे एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे? एक्टिव रीजन। एंड इस रीजन में बीजेटी बेस्ट वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर। ये पहला ऑपरेटिंग रीजन है बीजेटी का, फर्स्ट ऑपरेटिंग रीजन। सेकंड ऑपरेटिंग रीजन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन आल्सो फॉरवर्ड बायस। दैट रीजन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। एंड दिस रीजन में बीजेटी एक्ट करेगा क्लोज स्विच। स्विचिंग ऑपरेशन में भी बीजेटी का काम रहता है, इसलिए क्लोज स्विच। और नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आएगा ये होगा रिवर्स बायस, ये भी होगा जंक्शन रिवर्स बायस। तो इस ऑपरेटिंग रीजन में, इस ऑपरेटिंग रीजन को कहते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और इस रीजन में बीजेटी एक्ट करेगा ओपन स्विच। कौन सा स्विच? ओपन स्विच। और लास्ट में एक कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज, ये भी रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस। बट इस रीजन में कोई भी एप्लीकेशन ट्रांजिस्टर का डेवलप नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई जनरली ट्रांजिस्टर के बारे में अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज हम तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज, सबसे पहली बात, when I connect the emitter base junction forward bias, collector base junction reverse bias, operating region is called as active, application रहेगा as an amplifier. And that's why most of the time we are interested to see BJT as an amplifier. That's why what is the combination that emitter base junction forward bias, collector base junction reverse bias, that operating region is called as active, and then my BJT works as an amplifier. So our interest, because this is also possible, but our interest that we have to work, see the BJT as an amplifier. That's why what the biasing method we apply, emitter base junction forward bias, collector base junction reverse bias, that operating region is called as active, and in this region BJT works as an amplifier. That we'll see in working principle. So as we discussed that we have to apply emitter base junction forward bias. So once again I am taking the construction. So this is my N, this is my P, this is my N. I know that it is a feel that is a longer answer, but unless and until you understand the concept, you cannot by heart it properly. That's why this is again my emitter, this is again my base, and this is again my collector. So between emitter and base there is a depletion region in unbiased mode, and that junction is called as emitter base junction. Also, even though there is no voltage, there is small depletion region between collector and base junction. So I am showing that collector base junction. तो ये मेरा ट्रांजिस्टर है, 3 टर्मिनल वाला ट्रांजिस्टर जो मार्केट से आप लेके आएंगे, it looks like this. Now we have to connect the proper voltage to understand the working principle. So when you connect the proper voltage, what is the meaning to connect the proper voltage? What is the condition to work BJT as an amplifier? Emitter base junction should be forward bias. Forward bias का मतलब N should connected to negative, P should connected to positive. Where I am applying voltage? I am applying voltage across emitter, so I am denote this battery as a VEE, emitter couple voltage. Similarly, मेरा collector base junction क्या होना चाहिए? Reverse bias. Reverse bias मतलब N should be connected to positive, remaining terminal to the negative, and I am connecting voltage to the collector. That's why this voltage is called as VCC, collector couple voltage. So दो बैटरीज मैंने कनेक्ट किया, एक बैटरी को कनेक्ट किया फॉरवर्ड बायस में, एक बैटरी को कनेक्ट किया रिवर्स बायस में। तो अभी क्या होगा? आई एम शोइंग द इलेक्ट्रॉन्स हियर, poles, and again the electrons. Now the important point, that is at start, if I plot the output characteristic always रहेगा आपका output current, that is called as IC versus output voltage VCE. What is a VCE? It is voltage between collector and emitter. Yeah, you can say in common emitter it is VCB. तो ये जो वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ, that voltage is called as VCB, और ये मेरा आउटपुट करंट रहेगा IC. तो यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जब मैंने ये बैटरी भी 0 को रखा, ये बैटरी भी 0 को रखा, तो आई एम नॉट अप्लाइंग एनी वोल्टेज टू एनी जंक्शन. And when I am not applying any voltage to any junction, there is any current? No. मतलब what is the output current? IC equals to 0. जब आउटपुट करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक चला जाएगा x एक्सिस पे. दैट रीजन इज कॉल्ड एज
कट ऑफ रीजन, कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, इसका मतलब माय बीजेटी एक्ट एज ओपन स्विच. व्हाट माय बीजेटी एक्टिंग एज हियर? ओपन स्विच. इसे हम कहेंगे पहला एप्लीकेशन ओपन स्विच, मतलब बोथ द जंक्शन नो वोल्टेज, मतलब अनबायस. एंड बीजेटी का और एक एप्लीकेशन है, बीजेटी के दो एप्लीकेशन है. बीजेटी कैन एक्ट एज अ स्विच, ऑन ऑफ स्विच, और बीजेटी कैन एक्ट एज एन एम्पलीफायर. तो मैंने अगर वोल्टेज नहीं अप्लाई किया तो मेरा बीजेटी कट ऑफ रीजन में रहेगा. चलो अभी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस और इसको कहते हैं रिवर्स बायस. अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, इसको मैंने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, इसको मैंने रिवर्स बायस अप्लाई किया, ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस. जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना वोल्टेज रहेगा अनबायस में? 0.7 डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज. जब ये बैटरी ये 0.7 ओवरकम करेगी तो कैन आई से देयर इज नो डिप्लीशन रीजन. Electrons start accelerating from emitter to the base, and when electrons are start accelerating from emitter to base, there is generation of first current of transistor called as IE, that is called as emitter current. Same current passes, same electrons are passes to the base, some of them will recombine and remaining contribute another current of BJT, that is called as IE. This is a process take place between emitter and base because this junction is forward bias. And then when you apply the reverse bias, so what will happen here? अगर गलती से सपोज ऑलरेडी यहाँ डिप्लीशन रीजन है, ऊपर से रिवर्स बायस मतलब डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, और अगर आपकी डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कैरियर फ्लो नहीं होंगे, लेकिन आपको इनपुट वोल्टेज इतना बढ़ाना पड़ेगा कि सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस that depletion region and then they enter and contribute another current of BJT, that is called as IC. इसका मतलब आपको वोल्टेज इतना बढ़ाना पड़ेगा कि जंक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, that is called as IC. और वोल्टेज बढ़ा दिया तो और करंट बढ़ जाएगा, और वोल्टेज बढ़ा दिया तो और करंट बढ़ जाएगा, मतलब जितना इनपुट बढ़ा रहे उतना आउटपुट बढ़ेगा. दिस रीजन इज कॉल्ड एज एक्टिव रीजन. और अगर मैंने दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस किया तो दोनों जंक्शन में कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं होगी, इसका मतलब लार्ज करंट फ्लो होगा. दिस रीजन इज कॉल्ड एज सैचुरेशन रीजन. और इस रीजन में बीजेटी एक्ट करेगा शॉक फ्लो स्विच, और इस रीजन में बीजेटी एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर, एक्ट करेगा एज एन एम्पलीफायर. एंड इफ यू अप्लाई KCL at base, then what is the KCL equation? IE always equals to become IC plus IB. This is the current equation for the BJT. So in exam point of view, just you have to explain this graph and in short this working principle of the BJT. This is the first question called as explain. This is the first question called as explain the working principle of BJT. Now without wasting, now we will go for second question. Second question is, what is the question number 2, that is explain BJT as an amplifier. Explain BJT as an amplifier. Explain BJT as an amplifier. First job that you have to go for circuit diagram. In circuit diagram, just you have to draw BJT in common emitters. सर्किट डायग्राम जरा ध्यान से, क्योंकि सर्किट डायग्राम को ज्यादा मार्क्स रहेंगे. BJT निकालना है, यहाँ रहेगा आपका RC, यहाँ का इमिटर रेजिस्टेंस को कहेंगे RE, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका इनपुट रेजिस्टेंस कॉल्ड एज RB, ये रहेगा जंक्शन, ये रहेगा आपका R1, ये रहेगा आपका R2, ये बेस के रेजिस्टेंस रहेंगे. यहाँ रहेगा सप्लाई वोल्टेज. बाहर करो अभी ये, बिकॉज इट इज अ बिग थ्योरी, नॉट पॉसिबल टू कवर इन शॉर्ट आंसर. यहाँ एक कपलिंग कैपेसिटर रहेगा तो यहाँ आप अप्लाई करोगे इनपुट वोल्टेज, और यहाँ से मिलेगा आपको कैपेसिटर के थ्रू द आउटपुट वोल्टेज. तो ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज इन बीजेटी. और बीजेटी में बीटा फंक्शन आपको ड्रॉ करना है, तो ये रहेगा आपका ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर. तो इसमें R1, R2, RE and RC, they are known as biasing resistance. They are known as biasing resistance. Biasing resistance. And यहाँ explanation में आपको इतना समझाना है कि when you apply very small level of input, you will get enlarged version of output but out of phase.
इतनी डायग्राम आपको अच्छी तरह से ड्रॉ करना है जस्ट टू एक्सप्लेन बीजेटी एज एन एम्पलीफायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सर्किट डायग्राम अच्छी तरह से बनानी है, ये पैरामीटर को डिफाइन करना है। एंड एम्पलीफायर एक्शन में आपको भी पता है व्हाट इज अ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इक्वल्स टू, ये हमेशा रहता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो जब आप आउटपुट करंट की बात करोगे तो बीजेटी में आउटपुट करंट रहेगा आईसी, इनपुट करंट रहेगा आईबी, तो बीटा ऑलवेज इक्वल्स टू आईसी बाय आईबी। फ्रॉम दैट आईसी इक्वल्स टू होगा बीटा टाइम आईबी। व्हाट इज आईसी? दिस इज आउटपुट करंट, बीटा कम से कम 100 रहेगा बिकॉज डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन बेस, और IB is input. So this action is sufficient to explain in short, that is what is the output equals to 100 time input. मतलब जब आप small signal यहाँ apply करोगे तो you will get large amount of output, and that is the concept of BJT as an amplifier. I know BJT as an amplifier is a big subject, so just 4 marks or 6 mark point of view you have to write this diagram, this explanation for BJT as an amplifier. तो 6 marks के लिए इतना काफी रहेगा for BJT as an amplifier.